Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Force and Motion. Today we are going to discuss about फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हम मुख्तलिफ फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर ही फोर्स के बारे में है, तो क्यों ना हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. उसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुनना है और फिर आंसर करना है. सो व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल, ठीक है, इज कॉल्ड फोर्स. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? It can either stop it, it can make them move faster, it can change their direction. So my dear students, now is the time for an activity. For this activity, all you need is a ball. So बहुत आसान activity है teachers, you can easily conduct it in the class. आप वैसे अगर ball नहीं है तो आप ये किसी भी object से कर सकते हैं. So my dear students, when you throw a ball upward, why does it always come back? जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस क्यों आ जाती है? मैं इसको फेंकूं, बॉटल को फेंकूं, why do they always come back? हर दफा वापस नीचे आ जाते हैं. Why? क्या चीज है मैग्नेट की तरह जो इनको नीचे खींच लेती है? What is it? That is force of. कौन सी फोर्स है जो इनको नीचे खींच रही है? That is force of gravity. So, my dear students, throw a ball upward and see what happens. Did the ball come back or stay in the air? It will come back. And why did it come back? Because of the force of gravity. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to identify gravity as force that draws objects to earth. So my dear students, बच्चे आज gravity के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है. Okay, my dear students, so pre-reading question, quickly tell me, why do we not float on earth like space? हम अर्थ में तैरते क्यों नहीं हैं? हम क्यों आराम से अपने कदम जो हैं वो जमा कर चल सकते हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे कदम जमे रहते हैं और इसकी वजह से वी कैन इजीली वॉक. बट ऑन स्पेस, बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, सो पीपल कैन नॉट वॉक देयर, दे फ्लोट देयर. So my dear students, now is the time for reading. For reading, you will open page number 83 in your science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Force of gravity. There is another force that the earth applies to the object. It is called the force of gravity. It is due to gravity that we move on the ground. We walk on the ground due to gravity. The force of gravity depends upon the two factors. So my dear students, ये ग्रेविटी ही की वजह है जिसकी वजह से आप चल सकते हैं. चीज़ें जो हैं जब हवा में आप उनको फेंकते हैं तो वो वापस आपके पास आ जाती हैं, ज़मीन पर आकर गिरती हैं, बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स देम. और वो कौन सी फोर्स उनके ऊपर एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से वो वापस आ जाते हैं? दैट इज द ग्रेविटी, दैट इज द अर्थ्स पुल. The greater the mass of the object, the greater will be the force of gravity and vice versa. So my dear students, जितनी ज़्यादा चीज़ भारी होगी उतनी ही ज़्यादा gravity जो है वो उसके ऊपर act करेगी. For example, I have a lighter ball here and I have an apple here. So my dear students, कौन सी चीज़ जो है उसको हवा gravity जो है वो अपनी तरफ जल्दी खींचेगी? अगर मैं बॉल को और इसको सेम टाइम में फेंकूँ, so this will come back quickly. इंस्टेड ऑफ दिस, ये देर से नीचे आएगा और आप इसको स्टॉप वॉच से मेजर भी कर सकते हैं. सो इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज का मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, तो ग्रेविटी उसके ऊपर ज्यादा एक्ट करेगी, उसको ज्यादा पुल करेगी. सिमिलरली अगर किसी चीज का मास कम है, इट इज लाइटर, वो हल्की है, तो क्या होगा कि ग्रेविटी उसके ऊपर कम एक्ट करेगी. सो मोर द मास, द मोर द ग्रेविटी विल बी. लेसर द मास, lesser will gravity act on it. Closer it is to the ground, greater will be the force of gravity and vice versa. So my dear students, जिस चीज को आप जितना ऊपर से फेंकेंगे वो उतनी देर बाद नीचे आकर गिरेगी. जिस चीज को आप जितना नीचे से अर्थ के करीब से फेंकेंगे वो उतनी जल्दी नीचे जाकर गिरेगी. So the closer it is to the earth, it will have more gravity acting on it. और अगर वो दूर है अर्थ से तो उसको देर से ग्रेविटी जो है उसके ऊपर कम एक्ट करेगी और वो देर से नीचे आकर गिरेगी. So why do we float in space and we are not able to walk there? Because there is no gravity in the space.
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हेयर जो प्रैक्टिकल मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया, सो दिस इज लाइटर इन मास एंड दिस इज हैज मोर मास इन इट, सो द ग्रेविटी विल एक्ट मोर ऑन इट एंड पुल्स इट डाउनवर्ड, और इसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो लेस एक्ट करेगी, ये देर से नीचे आएगा. सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है आइजैक न्यूटन की, चले आए इसके बारे में पढ़ते हैं. अ लेजेंड यंग आइजैक न्यूटन was a son of a farmer. One day he was sitting under an apple tree. Suddenly an apple fell on his head from the tree. He started thinking about why do things fall on the earth. This incident guided him to the law of gravity. Today the world knows it, Newton's law of gravitation. So my dear students, एक दिन क्या हुआ that Isaac Newton was sitting under the tree, एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था, और सडनली एक एप्पल जो है वो उसके सर पे आके गिरा, और अचानक से वो ये बात सोचने लगा कि ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा नीचे क्यों आके गिरती हैं, ये ऊपर क्यों नहीं चली जाती. सो इसी चीज़ ने, इसी सोच ने उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, विच इज़ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो उसने इजाद किया, और हमने ग्रेविटी को डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ आइजैक न्यूटन. So gravitational force occurs between two different or the same objects, while the force of gravity acts between the earth's surface and any object. So my dear students, दो चीज़ों के दरमियान में जो attraction होती है that is gravitational force, और earth और चीज़ के दरमियान में, किसी भी चीज़ के दरमियान में जो force act करती है that is force of gravity. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हेयर इज एन होमवर्क एक्टिविटी जो कि आपने घर से करनी है. मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप किस तरह से करेंगे. होमवर्क, मेजर योर मास, व्हाट विल बी योर मास ऑन द मून. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या मास है, ठीक है, अर्थ पे आपका क्या मास है और मून पे आपका मास क्या होगा. मास विल रिमेन सेम, मास चेंज नहीं होता, चाहे ग्रेविटी है चाहे ग्रेविटी नहीं है, आपका मास जो है वो सेम रहेगा. ओके, देन 1/6 your weight on the earth will be your weight on the moon. Give a reason for this difference. So my dear students, आपका weight जो है वो वेरी करेगा अर्थ पे और मून पे. आपका weight जो है मून पे 1/6 टाइम कम हो जाएगा. Why? Why? Because on the moon there is less gravity. 1/6 time less gravity than the earth. अर्थ पर 1/6 टाइम मोर ग्रेविटी है मून से, मून पे 1/6 टाइम लेस ग्रेविटी है अर्थ से. इसकी वजह से आपका वेट जो है वो मून पे कम होगा और अर्थ पे वो आपको ज्यादा मिलेगा. ठीक है. सो अगर से अबाउट, अगर आपका वेट जो है 60 है ऑन अर्थ, सो मून पे जाके वो कम हो जाएगा 1/6 टाइम, क्योंकि मून पे क्या है, there is less gravity, 1/6 time less gravity है. So my dear students, now is the time for evaluation. What is force of gravity? The force between the earth and the objects which pulls everything towards itself is known as force of gravity. So what are the factors on which force of gravity depends? It depends on two factors, that is mass and distance from the earth. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number and then start doing the worksheet. So my dear students, fill in the blanks by choosing the correct word. Gravity is the force of dash between the object and the, so my dear students, gravity is the force of attraction between the object and the earth's surface. So the weight of the object on moon is dash of the weight of the object on earth, that is 1/6. Gravity depends upon dash and dash from the earth, mass and distance. Okay, now differentiate between force of gravity and gravitational force. So my dear students, force of gravity is the attraction between the object and the earth, and the gravitational force is the attraction between two objects. ये मैंने अभी डिस्कस किया है लेक्चर में, you can again watch it. So the next part of the worksheet is, if your weight on earth is 70 kg, what will be your weight on moon? It will be 1/6
of the weight on the earth. What are the factors on which gravity depends? There are two factors, that is mass and distance. Okay, my dear students, for homework, you will do MCQ number 3 and 4 given on page number 89, and you will do question number 3 and 6 from section B given on page number 89 and 90 in your notebooks, and you will also do home activity given on page number 83. ये मैंने आपको already समझा दी है. And the wrap up. So, my dear students, the force of the earth that it exerts to pull objects towards itself is called force of gravity. And my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.